हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्डपैड की थ्योरी के बारे में। देखिए आखिरकार वर्डपैड होता क्या है, तो हम उसको थ्योरी के लिए बात करते हैं। जैसे कि वर्डपैड इज़ अ बेसिक वर्डपैड word processing program that come pre-installed on the Microsoft Windows operating system. It provides user with a simple interface for creating and editing documents. WordPad is more advanced than Notepad, another built-in text editor on Windows, offering basic formatting options such as font selection, text alignment, and the ability to insert image. किस फीचर ऑफ वर्डपैड इंक्लूडेड, जैसे टैक्स एडिटिंग क्या होता है, यूजर कैन टाइप एडिट एंड फॉर्मेट टैक्स इन अ डॉक्यूमेंट। फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, बेसिक फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, यूजर कैन अलाइन टैक्स लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई एंड क्रिएट बुलेट एंड नंबर लिस्ट। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्डपैड अलाउ द inserts of image into document. Printing user can print their document directly from WordPad. While WordPad is useful tool for simple document creation, it lacks the extensive features found in the more advanced word process like Microsoft Word. User looking for more advanced formatting styles, collaboration features and other advanced functionality often turn to the more reverse word processing software for their needs. थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर ये नोट्स आपको अच्छे लगे थ्योरी के लिए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।